Hello, aspirant. So, in our thematic series, today we are going to discuss about the biology. In the UPSC Prelims, every year there are more than 12 questions in the science and tech the UPSC is asking, and out of those 12 questions, 2 to 3 questions are from the basics of biology. Like sometimes they ask the question related to the cell wall of the difference between the plants and animal cells, the question related to the virus, then question related to the bacteria and the fungi. So here we are doing the thematic series. हम thematic series कर रहे हैं Edukemy में specifically. ये thematic series 1979 से 2024 45 years of question को cover कर रहा है. And the theme wise आपके लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है, किसी भी टॉपिक में अगर आप वीक हैं तो you can attempt those questions directly on the portal and you can identify in which topic you are specifically weak. तो आप उसको identify कर सकते हैं. इसके साथ साथ you can attempt the same question on a Edukemy portal. आप जाके same question को Edukemy portal पे attempt कर सकते हैं. And we are also providing you the Edukemy GS class notes जो एक मार्केट में अवेलेबल है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक एंड these are one of the best notes available. इसको डाउनलोड कर सकते हैं गिवन लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी एंड these are the PYQ from 1979 to 2024 and this is a part 2 of the video. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो you can see that video on Edukemy YouTube channel under the playlist of the Science and Technology theme wise question paper. Okay, so the question number one is asked in the 2016 and this question is related to the hormones. There are various kind of the hormones. One is the plant hormone and second is the animal hormones. And hormones का chapter आपकी NCERT में given है in the class 12th NCERT. आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं. The question is saying match the hormones in the list 1 with the items in the list 2 and select the correct answer using the codes given below. There are 4 hormones are given. One is the adrenaline, second is the estrogen, third is the insulin, and fourth is the pherohormones. Insulin, everybody is known. Insulin is related to the glucose. तो आप इसको मैच कर सकते हैं. C is directly matching with the 4. Insulin is directly related with the glucose. So C is matching with the 4. So we are having 2 options. Option number A and option number C. जहाँ पे C is equal to 4 हो रहा है. Estrogen is a female hormone. Estrogen is a female hormone. Specifically pregnancy के time release होता है. ये female की body में present होता है. तो estrogen is a female hormone. B is 3. If we are coming, B is 3 only here. First option में नहीं है, C option में B is 3 है. So the answer of this question will be C. The answer of this question is equal to C. तो आप इसको मैच कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं फेरोहॉर्मोन्स वो होते हैं जो स्मेल से सेंस करते हैं. लाइक द dogs, animals are having the pheromones. Even the humans is also having the pheromones. They're attracting the partner through the smell, through sense. So pheromones are the D2 and adrenaline is the एंगर, फियर एंड डेंजर. जब आपको एंगर ज्यादा आ रहा होता है, डर लग रहा होता है, उस टाइम पे एड्रेनलिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है. ओके, तो द आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इज सी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो आप हार्मोन्स को कहाँ से याद रखेंगे? हार्मोन्स आपको एनसीईआरटी बुक से है. आप क्लास 12 क्लास की एनसीईआरटी, क्लास 11 क्लास की एनसीईआरटी से हार्मोन्स को पढ़ सकते हैं. प्लांट हार्मोन्स एज वेल एज द ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था. Which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of the higher plants? The relation between the fungi and roots of higher plants and the roots of higher plants is known as the mycorrhiza. The relation between the fungi and the roots of higher plant is known as the mycorrhiza. It's a association between the fungi and the higher plants. So इस पर depend करता है. So the answer of this question is the mycorrhiza. And this question is also from your NCERT books of the 11th class from the plant physiology से वहाँ पे given है. It's a NCERT question. So NCERT का भी importance है when you are reading the NCERT there. Okay. So now let's move to the mycorrhiza. यहाँ अगर हम इसका solution देखें तो mycorrhiza are a strong association or symbiosis between the roots of a host plant and a mycorrhizal fungus. And it's a fungus root. In the most situation, relationship is mutually benefits for the
plants and the fungus, means it's a part of mutualism. It's a part of mutualism. यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा कि यहाँ पे दे आर गिवन द फोर ऑप्शन, तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द लाइकेन इज, एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द कोरेलॉइड रूट्स क्या होते हैं, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द बायोफर्टिलाइजर्स. मे बी द नेक्स्ट ईयर इन द 2025 दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दीज ऑप्शंस. तो आपको ऑप्शंस को भी कंसिडरेशन देना होता है कि व्हेन एवर यू आर रीडिंग कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके ऑप्शन देख रहे हैं, यू शुड फोकस ऑन द ऑप्शंस एज वेल. नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दीज ऑप्शन. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स 2025. Prelims 2025, we are launching our prelim support program from the 9th of December. There are the various benefits of this program. We are conducting the practice test and the analysis. We are conducting the practice test and the analysis sheets for the PYQ specifically. जैसे ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ द यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का रिलीवेंस क्या है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं. तो आपको प्रिपरेशन से पहले, हर टेस्ट से पहले आपको एक एनालिसिस शीट कराया जाता है, एनालिसिस कराया जाता है क्वेश्चंस का, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि सब्जेक्ट का डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ द इकोनॉमी क्या है, पॉलिटी में क्या डिमांड है पेपर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको कराई जाती हैं. वी आर फोकसिंग ऑन द बुक रीडिंग सेशन एज वेल एज द रिविजन सेशन. स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई, दे डोंट नो कि हाउ टू रीड अ बुक, और किसी टॉपिक्स को भी पढ़ना है तो उसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स अ कंसर्न फॉर द एस्पिरेंट. We are also conducting the book reading sessions and the revision session for some specific NCRTs as well as some standard books. We are also conducting the current affairs revision session from the April 2024 to 2025. So you can rely on these current affairs. More than 25 क्लास हम लोग यहाँ पे कराएंगे करंट अफेयर्स का, जिसमें हम पूरे साल भर का करंट अफेयर्स कवर करते हैं. एंड इट इज इस पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है, क्योंकि आप मैगजीन नहीं पढ़ सकते कंप्लीट, लाइक 1500-1800 पेज हो जाता है साल भर में. But through these classes, you can only get in the 150 to 200 pages of the complete year current affairs, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकता है. एंड फाइनली वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहां अपना रैंक देख सकते हैं विद द पीयर ग्रुप्स. आपका जिसके साथ कंपटीशन है आप उसको मैच कर सकते हैं, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यू कैन get through that the प्रयास all India mock test. The link of this program is given in the description and also in the comment section, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. लास्ट ईयर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सक्सेस रेट रहा, मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट जो एडुकेमी के साथ एनरोल थे, उन्होंने प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को क्वालिफाई किया है. More than 50% of the questions directly appeared in the examination from our prelim test series. More than 50% of the questions directly appear in the prelims test series. And ये देखा गया है specifically, when you are joining us, you are going to boost your accuracy in the examination as well as you will attempt with more confidence के साथ आप answers को attempt करेंगे. The link of the course is given in the description as well as the comment section. Okay, now let's move to the question number 3. The question number 3, which of the following is the process involved in the photosynthesis? अगर आप देखोगे, in the last video there was also one question on the photosynthesis, and that question was over 2021. How the UPSC is repeating. 2014 में पहले photosynthesis पे question पूछा है. Now they're asking again the question on the photosynthesis, and the question pattern was different. एक क्वेश्चन में पूछा गया फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या है, एंड सेकंड में पूछा गया व्हाट्स द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन. पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी. नो, इन द फोटोसिंथेसिस पोटेंशियल एनर्जी फ्री एनर्जी में नहीं रिलीज होता. दिस इज रिवर्स प्रोसेस. फ्री एनर्जी, दैट्स द सोलर एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी टू सर्वाइवल फॉर द फूड बाय द प्लांट्स. यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, दे आर कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी into the potential energy, and they store the potential energy for the as a food. So let's see the second option. Free energy is converted into the potential energy and stored. Yes, this is the right option. Free energy को convert किया जाता है potential energy में. Third option, food is oxidized to release carbon dioxide. No, they release the oxygen, not the carbon dioxide. Oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor is given out. No, this is also a wrong statement. So the answer of this question is B. तो यहाँ पर आपको अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लगाना होता है. द बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई करना होता है.
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, प्लांट्स रिलीज द ऑक्सीजन, बट सम सर्टेन एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, तो यू कैन एलिमिनेट सी एंड डी देयर डायरेक्टली. And potential energy released into the form of free energy, this is not a right statement in this context of the question, so the answer of this question is B here. Okay, question number 4. अगर हम देखेंगे in the 2016 there was a option of lichen, हमने first question में ही बात करी, lichen as option were given, and they ask a question on the lichen as well. So the question is, lichen which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association. Lichen is a symbiotic association between algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, and the fungi and mosses. A lichen is an symbiotic relationship between the algae and the fungi. And ये symbiotic relationship algae और fungi के बीच में होता है. Like mycorrhiza के बारे में आपने देखा है symbiotic relationship between. बताइए आप लोग comment section में बता सकते हैं क्योंकि हमने discuss किया है. Similarly, the lichen is a association between the algae and the fungi, and it's also a symbiotic relationship, means benefit for the each other. So the answer of the question number 4 is B here. Okay, now let's move to the question number 5. Question number 5 is about, among the following organism, which one does not belong to the class of 3? यहाँ पे 4 ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से 3 एक जैसे और एक अलग है इनसे. Which one is the different? कौन सा इनकी क्लास से बिलोंग नहीं करता है? If we see here, the scorpion, spider, and mites, these all are insect-related species. These are the insect species. Means they are belong to the class of insect. Where the crab is a sea species, जहाँ पे crab is living in the sea, and sea species बोल सकते हैं या फिर its survival in the sea, crab. This is not belong to the class of insects. It's not belong to the class of insects. So the answer of this question is A. It is not belong to the class of insect, and others are belong to the class of insect. So the answer of this question is A here. The question number 5 is A. So this is also depend on your basic information. You just know that कि है mites, scorpion and spiders. आप देखा भी होगा in the day-to-day life. These are all are comes under same category. So the answer of this question is A. Now let's move to the question number 6. The question number 6, which of the following statements is or are correct regarding the vegetative propagation of plants? तो हमें बताना है कि vegetative propagation of plants के regarding क्या statements correct है. सबसे पहले you need to know what exactly is vegetative propagation होता क्या है. Vegetative propagation is a techniques, we can say this is a kind of the artificial propagation जहाँ पे हम different disease free plants बनाते हैं, different variety of fruits create करते हैं through the different kind of the process, maybe cutting the stems, maybe adjoining the different kind of stems. इसमें multiple kind 5-6 तरीके की process होती हैं जिसमें हम different kind of the plant species को भी we are merging together and making a new species of the plants. Okay, so the option number 1, vegetative propagation produce clonal population. Yes. Vegetative propagation help in eliminating the virus. Yes. जब हम एक नई plant species बनाते हैं from the old plant species, that help us to eliminate the virus, bacteria as well. And vegetative propagation can be practiced most of the year. Mostly monsoon के time पे ज़्यादा successful होता है, but it can be practiced most of the time of the year. So the answer of this question is 1, 2, and 3. All the options are correct here related to the vegetative propagation. So this is the basic question vegetative propagation, और ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी गिवन है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है एंड इसके डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स क्या क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में. Okay, now let's move to the question number 7. The question number 7. Consider the following. The phenomenon of hibernation can be observed in which of the following kinds of animal? Here they are asking about the hibernation. तो hibernation है क्या? Hibernation is a process in which some of the animals go for a long sleep during the time of winter when the enough food is not available. So they would go वो sleep में चले जाते हैं for the 5 to 6 months, and that process is known as the hibernation. So bats, bears, and rodents are the
एग्जाम्पल ऑफ द हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो स्पेसिफिकली हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अगर आप देखोगे रोडेंट्स में स्पेसिफिकली लिजर्ड्स आपको विंटर में नहीं दिखते हैं, बैट्स भी नहीं होते हैं, बियर्स इज ऑल्सो गोइंग टू द हाइबरनेशंस। तो दीज आर मेन एनिमल्स दैट गोइंग टू द हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन के साथ आप मुझे बताएं कि एस्टिवेशन क्या होता है। इट्स अ टर्म रिलेटेड अगेन, व्हाट इज हाइबरनेशन हमने डिस्कस किया, बट नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द एस्टिवेशन। Answer of this question is C. Question number 7. Answer is C. Now let's move to the question number 8. The question number 8. Improper handling and storage of cereal grains and the oil seeds result in the production of toxin. They result in the production of toxin, and this toxin is known as aflatoxins, which are generally destroyed by the normal cooking process. Aflatoxin is produced by, and this is a direct question from your 11th class NCERT book. In the plant physiology chapters as well as the plant kingdom chapters, you can find out the aflatoxin is released by which of the animals. Aflatoxins is released by which of the animals? And the answer of this question is mouse. And this is a pure factual questions. These are the pure factual question. आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीन से चार क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के फ्यू चैप्टर्स हैं दैट वी लिस्ट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको फोकस करना होता है, बिकॉज दैट्स अ रिपीटिशन अगेन एंड अगेन। अगर आप डीएनए आरएनए क्वेश्चंस भी देखेंगे, लुकिंग एट अ क्वेश्चन ऑफ वायरस के देखेंगे, वैक्सीनेशन के देखेंगे, या फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, तो डायरेक्टली गिवन है एनसीईआरटी में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। Okay, now let's come to the question number 9. The question number 9, in the grassland, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of. Specifically, the question is here in the case of the grasslands. Why the tree do not replace the grasses? There can be the multiple kind of condition कि क्यों tree replace नहीं कर पाते grassland में, specifically in the ecological succession. Ecological succession क्या होता है? Ecological succession में specifically there are the various stages जहाँ से barren land से specifically it's grow to the kind of forest. Grasslands के बाद mini scrubs के बाद then there are shrubs के बाद there are the little trees, then it's converted into the forest specifically. And this is the progression. लेकिन इन सम प्लेस ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल नहीं है, एंड ड्यू टू द फायर ऑल्सो, एंड द वाटर लिमिट्स एंड द फायर कैन लीड टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो पाता। तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 इज सी। एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर आप क्लास 12th क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे, देयर इज अ चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4, and this is given in the unit number 4 of the class 12 NCERT, जहाँ पे ecology and environment is the unit name। तो आप वहां से प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन को, एज वेल एज कितनी स्टेजेज हैं प्राइमरी सक्सेशन का, दैट्स आल्सो गिवन इन अ फिगर फॉर्म। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट में भी 17 to 18 क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है, एंड दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन फॉर द एनवायरमेंट एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So it's become your responsibility to read the NCERT books of class 12. Okay, now let's move to the last question, the question number 10. Which of the following statements are correct? This question was asked by UPSC in 2013, and the same question was repeated by UPSC in 2023. You can see the repetition here. The same question is repeated by UPSC in 2023. If you see the second statement here, the virus can be cultured in any synthetic medium. यही सेम स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी ने 2023 में सेम क्वेश्चन में पूछा है। अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होते यूपीएससी के, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे इन 2023। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ दिस सीरीज कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर कैसे करना, हाउ टू आइडेंटिफाई कौन से क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं और किस ऑप्शन से नया क्वेश्चन बन सकता है और आपको ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है। ओके, तो यही स्पेसिफिकली इस सीरीज का आइडिया है, हाउ टू डू दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएससी एग्जामिनेशन।
इसके साथ साथ हम हमारे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आपको मल्टीपल चीजें सिखाते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, आपको एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करना है, किस क्वेश्चन को आपको लीव करना है, ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड करना है। वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जो स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर 2024 से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन अगेन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कहता है वायरस लाइक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वायरस में एंजाइम नहीं होते, क्योंकि वायरस को सर्वाइवल के लिए होस्ट चाहिए, क्योंकि वायरस अपना साइकिल तभी कंप्लीट कर सकता है जब वो होस्ट के अंदर जाता है। होस्ट यहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, होस्ट यहाँ पे ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो वायरस एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी और वायरस एंटर इनटू द एनिमल्स बॉडी टू कंप्लीट द साइकिल, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। So virus is not having the enzyme that's necessary for the generation. So the first statement is correct here. If I'm coming to option directly, अगर मैं option में directly आ जाता हूँ यहाँ पे, तो first is here, so I can eliminate the second option. Now let's come to the statement number 2. The virus can be cultured in any synthetic medium. Virus cannot be cultured. Virus को culture नहीं किया जा सकता. Again the same reason. Virus required host to complete its life cycle. Virus is non-living outside the host organism, but living inside the host organism, because they enter into the cell cycle of the human beings or the cell cycles of the animal to produce the protein through the डीएनए, आरएनए एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये हम हमारी क्लास में पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इसके लिए आप यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द सेम टॉपिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नाउ अगेन कम टू द ऑप्शन डी। आई कैन एलिमिनेट द डी option here because 2 is present here. Viruses are transmitted from one organism to the another by biological vector only. No, it's a like, yes, biological vector से हो सकते हैं transmit, but this is not the only condition, or not the only biological vectors is not the only case जिसके through virus can be transmitted. Virus can be transmitted to the organism through the any mode. They can be transmitted through the air. They can be transmitted when the person come in the contact with the another person, and blood transfusions के through भी transfer हो सकता है. So the third statement is incorrect because of the word only given here. Because of the word only given here. तो आप जब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन का, तो यू शुड हैव क्लैरिटी एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम स्ट्रेस में होते हैं, तो वी आर जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट, जिस वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स, आप उसको ठीक मार्क कर देते हैं, बट द वर्ड इज गिवन हियर ओनली, तो यू शुड फोकस ऑन दैट it is not only the one way जिसके थ्रू वो ट्रांसफर करते हैं, there can be the multiple way जिससे वो ट्रांसमिट हो सकते हैं in the organism. The third statement is also wrong here. I can eliminate the option number C as well. So answer of this question is A, that is one only. Answer of this question is A, one only. So these are the question of the biology जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और these are the static questions जो यूपीएससी पूछता है एवरी ईयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सीएस प्रीलिम्स। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है whenever you are preparing for the biology or you are preparing for the science and technology, you should focus on the some of the major points like बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी आपके क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से मेरा कहने का मतलब है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डीएनए, आरएनए, like the concepts of the biotechnology, like the concepts of the specifically the application of the biotechnology आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ you should focus on the animal physiology. Animal physiology में different kind of the system like digestive system क्या है, excretory system क्या होता है, excretory system में किस कंडीशन का लाइक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन इन द 2024 जहाँ पे पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी आउट ऑफ द 4 केमिकल्स कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, HNO3, दीज आर द 4 ऑप्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया जाता है बिकॉज डायलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड वेसल को, बीपी को कंट्रोल में करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो आपको इन चीजों पे क्लैरिटी होना चाहिए।
अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लाइक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उनके डिस्प्ले के बारे में पूछ लिया गया था कि एलईडी और ओएलईडी डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। Now the new generation is shifting toward the digital watches. So they ask the question on the digital watches application कि डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, जो वेरिएबल डिवाइसेस हैं, उनका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो यूपीएससी इज आस्किंग दोज क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एंड जिसका रिलीवेंस है, जो एक मेजर इम्पैक्ट डालता है जनरेशन पे। दैट्स काइंड ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यू शुड फोकस ऑन द टॉपिक्स जो रिक्वायरमेंट है, and you should focus on the NCRT, like the class 11th NCRT, class 12th NCRT, and a few chapters, not all the chapters. In the class 12, you can focus on the biotechnology units, you can focus on the health and disease unit, and you can also focus on the environment and ecology unit. That's the last unit, that's specific for your environmental section. In the class 11th, you can focus on the unit 1 and the unit 2 that is specifically related to the एनिमल किंगडम, जहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू विच क्लास, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एज वेल एज द एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स को आपको पढ़ना जरूरी है। तो सेल चैप्टर, स्टेम सेल्स के बारे में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में एंड हॉर्मोन्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंड वी आर लॉन्चिंग अ प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में। दे आर द वेरियस कंपोनेंट इन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन। So we will meet in the next video for the different concepts and the different questions of the UPSC with the different topics. Okay, I will see you soon. Thank you everyone.